Now, in exercise, this is question number 2.7. Question number 2.7. तो 2.7 में आपको क्या करना है? A solution is obtained. A solution is obtained by, see, a solution is obtained by mixing 300 gram of 25% and 400 gram of 40% of solution by mass. To calculate mass percent of the solution. देखो जिस हिसाब से डेटा दिया है ना, मास परसेंट मतलब परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना है, परसेंटेज वेट बाय वेट। चलो, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन what will happen? 25% of solution means 25 gram solute in 100 gram of solution, है ना, and 40% मतलब 40 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। क्लियर? परसेंटेज का मतलब ही यही होता है। तो नाउ मास ऑफ सोल्यूट इन 300 ग्राम इज इक्वल टू 25 इंटू 25% ऑफ 300, मतलब 25 अपॉन में 100 इंटू 300 हो जाएगा। क्लियरली 75 ग्राम विल कम। सिमिलरली मास ऑफ सोल्यूट इन 400 ग्राम, तो 40% ऑफ 400, तो 40 अपॉन में 100 इंटू 400, तो 160 विल कम। क्लियर? So this is again related with respect to solute. So now total mass of solute is equal to 75 plus 160, so 235 gram will come. Similarly total mass of solution, तो solution कितना है 300 plus 400, तो 700 gram will come. Clear? So now we will discuss here mass percent of solute in final mixture. Mass percent of solute इन फाइनल मिक्सचर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्लियर? वेट ऑफ सॉल्यूट। चलो मुझे परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना है, तो क्या आएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 अपॉन में टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 75 प्लस 160, तो 235 आ गया, नीचे 700, तो परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू 33.57% विल कम। 33.57% विल कम। सिमिलरली मास परसेंट ऑफ वाटर इन फाइनल मिक्सचर, तो 100 माइनस 33.57, तो 66.43% विल कम। देखो कभी कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया हो, है ना, कभी कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया है और उसमें बता नहीं रहा है कि आपको निकालना क्या है और परसेंटेज दिया है, तो हमेशा आपको वेट बाय वेट निकालना है। यू हैव टू डिटरमाइन हियर मींस वेट बाय वेट। चलो 2.8 एन एंटीफ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, एंटीफ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 222 222.6 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर। तो कैलकुलेट मोलालिटी of the solution, आपको मोलालिटी निकालना है and density of solution is also given, and then after we have to find out molarity also. We have to find out molality as well as we can say that here means molarity is there. Clear? तो इथिलीन ग्लाइकोल है, तो इसलिए ये WB क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे WB, तो देखो इसमें कैसा आ जाता है, तो दिस इज सॉल्यूशन सॉल्यूट सॉल्वेंट। क्लियर? तो सॉल्यूट क्या है B और सॉल्वेंट क्या है A। तब मैं वेट की बात करूं, वेट, तो चलो वेट और ये आपका क्या आएगा वेट। ऐसे ही मॉलिक्यूलर वेट, तो यहाँ पे M B एंड देन आफ्टर M A विल कम। तो सॉल्यूट कौन है? इथिलीन ग्लाइकोल। तो WB is equal to 222.6 and MB, है ना, तो here we can say that WA या MB, तो here we can say that MB molecular weight is 62, किसका? इथिलीन ग्लाइकोल का। निकाल सकते हो आप। WA is equal to 200 ग्राम and MA, है ना, तो MA क्या होता है? तो दिस इज वी कैन से दैट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो सिंपल वाटर है, तो दैट इज वी कैन से दैट 18 ग्राम पर मोल। इथिलीन ग्लाइकोल का यदि आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है C2H6O2,
तो ये 2C है, 6H है, तो यहाँ पे 2 12 6 1 और ये 16 है, 24 6 32, तो यहाँ पे 30 है, 32, तो 62 ग्राम पर मोल। तो दिस इज मोलर मास ऑफ, दिस वन इज मोलर मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। हियर फॉर्मूला, मोलारिटी का फॉर्मूला है वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट एंड दिस इज वेट ऑफ सॉल्वेंट और ये 1000 है। तो देख यहाँ पे W भी दिया है, WA इज इक्वल टू 200, WA आपका क्या है 200 है ना। तो सॉल्व किया तो 17.95 मोलारिटी विल बी देयर। क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस हियर मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ ग्लाइकोल एंड मास ऑफ वाटर। तो मास ऑफ ग्लाइकोल इज दिस वन एंड मास ऑफ वाटर दिस। So here 422.6 gram will come. Now volume of solution is equal to mass of solution upon density. तो 422.6 नीचे 1.072, तो volume of solution is equal to 394, volume of solution is equal to 394। तो ये density का फॉर्मूला है, density is equal to mass upon volume। अब आता है मोलारिटी, तो मोलारिटी is equal to here ये आ गया, मोलारिटी मतलब मोल पर लीटर, तो फॉर्मूला है वैल्यू पुटअप करो, हियर मोलारिटी विल बी 9.10। क्लियर? कभी भी देख मोलारिटी निकालना हो, मोलारिटी, तो मोलारिटी मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम इज देयर। क्लियर? नाउ इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 2.9, हियर मीन सैंपल, देखो ये क्या दिया हुआ है। Here we can say that 2.9, a sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform, supposed to be carcinogen. The level of contamination was 15 ppm by mass, है ना। तो now we have to determine, express this in percent by mass, आपको percent by mass में बताना है, and determine the molarity of chloroform in water। क्लियर हुआ कि नहीं? तो चलो यहाँ पे क्या आएगा गिवन क्वेश्चन, तो सी क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट इन 15 ppm by 10 raised to power 6 gram of water contain 15 gram of chloroform। The chloroform present in 15 ppm by 10 power 6 gram of water contain 15 gram of chloroform। तो percentage of chloroform by mass is equal to C weight of, we can say that here means solute और नीचे weight of solution into 100। तो this is percentage, तो percentage है तो 100 तो आएगा, तो weight of solute और नीचे weight of solution, तो क्या है 15 अपन में 10 power 6 into 100, तो 15 into 10 raised to minus 4 will come। Now we will discuss here molecular mass of chloroform। तो क्लोरोफॉर्म का मतलब C आता है, H आता है, 3Cl, तो मास ऑफ कार्बन इज 12, हाइड्रोजन इज 1, Cl इज 35.5, तो 119.5 ग्राम पर मोल, दिस इज मॉलिक्यूलर मास। अब 100 ग्राम और 0.1 किलोग्राम वाटर कंटेन क्लोरोफॉर्म, तो 15 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4, है ना। 0.1 किलोग्राम में कितना है 15 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4। अब क्या है, तो नाउ दिस इज मोलारिटी, तो मोलारिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, बट ऊपर 1000 कर दिया तो ग्राम आ जाएगा। अब सबकी वैल्यू रख दो, सॉल्व किया तो 1.25 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4 आ जाता है। तो अल्टीमेटली वी कैन से दैट 1.25 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4 इज देयर। तो दिस इज वी कैन से दैट आंसर, है ना। आंसर इट मींस मोलारिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर। Now next question, so question number 2.10 is there. So now we will discuss here question number 2.10. In case of 2.10, what will happen? To see what role does the molecular interaction play in solution of alcohol and water. What role, है ना? What role? Here we can say that
molecular interaction play in solution of alcohol as well as water? तो ये अल्कोहल है और ये क्या है, वाटर है. क्लियर? Here we can say that in alcohol and water solution, interaction between alcohol and water molecule shows intermolecular hydrogen bonding. This will represent intermolecular hydrogen bonding, but it is weaker than water. Water से weaker है, and alcohol hydrogen bonding. So here positive deviation is observed. So here we can say that positive deviation is observed from Raoult's law because of more escaping tendency. Escaping मतलब removal. Because of more escaping tendency of molecule in vapor phase is there. Here we can say that vapor phase. Clear? Again I am repeating. Here means between alcohol and water intermolecular hydrogen bond will come. Here we can say that intermolecular hydrogen bond will come. So what is meaning of intermolecular? तो intermolecular का मतलब कैसा होता है? One atom is hydrogen. One atom is again we can say that hydrogen. See, intermolecular hydrogen bond. तो one atom is hydrogen. Second may be either nitrogen, oxygen or fluorine. Here means ammonia will come. Here H2O will come. And here HF. इसी को क्या बोलते हैं? Intermolecular hydrogen bond. मतलब one atom is nitrogen combined with hydrogen, oxygen combined with hydrogen, fluorine combined with hydrogen. So ultimately here ammonia, water and HF will form. The intermolecular hydrogen bond is responsible for, we can say that, liquid states of matter. So this is again we can say that liquid states of matter. I version में. Now next question is, here we will discuss next question. उसमें आपको क्या करना है? Why do gases nearly always tend to be less soluble in liquid as temperature is increased? मतलब in case of liquid, if you are interested to dissolve gas, then why? Here see, if temperature will increases, then solubility will decrease. तो क्या बोलने का? As the temperature of gaseous solution in liquid increases, the kinetic energy of molecule of the gaseous molecule escapes out from solution. Clear? And shows low solubility at high temperature. Again I am repeating. As the temperature of gaseous solution in liquid increases, the kinetic energy of molecule of gaseous molecule escapes out from solution and shows low solubility at high temperature. Clear? In another way, we can say that, see, if temperature will be either more or less, then solubility of gaseous material inside water will be less. Solubility of gaseous material inside, we can say, water will be less. Therefore here we can say that aquatic animals are not comfortable in hot water as well as we can say that cold water. Clear? वो सब इधर आ जाएगा. अब आता है 2.12 state Henry's law and mention some important application. तो चलो जैसे ये देखो, ये सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. क्लियर? सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज directly proportional to mole fraction of solute, and whenever partial pressure of solution is equal to Kh into, this is mole fraction of solute. So what is Kh? It is Henry constant. What is Kh? So this is Henry constant. And what is X? The X is again is mole fraction of solute. So according to Henry's law, partial pressure of solution is directly proportional to mole fraction of solute.
And whenever we are removing this proportionality symbol, if we are removing this, we can say that proportionality symbol, here we can say that equal to KH. So here KH will come. So here KH. So KH मतलब Henry constant, and value of KH for different type of gases will be different here. Clear? So now we will discuss here is application of Henry's law. In case of application to make soft drink bottle more and more rich in CO2, sealing of bottle is done at high pressure. To make soft drink bottle more and more rich in CO2, the sealing of bottle is done at high pressure. Clear? Chalo, next one, deep sea divers. Here we can say that deep sea divers use helium and oxygen mixture for respiration. Here we can say that for respiration in place of nitrogen and oxygen, because nitrogen being more soluble in blood at high pressure, nitrogen being more soluble in blood at high pressure create painful effect on human body. Clear? तो एप्लीकेशन में क्या आ जाएगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू मेक सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल more and more rich in CO2, sealing of bottle is done at high pressure. Second one, deep sea diver use helium and oxygen mixture for respiration in place of nitrogen, oxygen, because N2 being more soluble in blood at high pressure create painful on the human body. Clear? Painful on the, we can say that here human body is there. Clear? So this is complete information. So whenever we are discussing this question related with respect to Henry's law, then here this KH value will be given. Here KH value will already, we can say that, given, and KH value for different type of gases will be different here. ठीक है? Now question number 2.13, the partial pressure of ethane over a saturated solution containing 6.56 into 10 raised to minus 3 gram of ethane is 1 bar, and if the solution containing this many gram of ethane, then what shall be the partial pressure of the gas here? Clear हुआ कि नहीं? तो according to Henry's law, here we can molality is equal to KH into P, है ना? KH मतलब क्या होता है? Here Henry constant, and P का मतलब क्या आ जाएगा? Partial pressure is there. क्लियर? तो या तो आप सी मास भी बोल सकते हो. तो यहाँ क्या दिया है? दिस मैनी ग्राम. तो हियर वेट इज गिवन. क्लियर? एक्चुअली कैसा होता है? P इज इक्वल टू KH. हियर वी कैन से दैट P इज इक्वल टू KH इनटू X, है ना? बट यहाँ पे क्या है? इथेन. तो इसका एक मास अलग अलग है. क्लियर हुआ कि नहीं? तो 6.56 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 KH इंटू 1 है. फिर ये मास इधर आया. अब क्या करना है? 1/2 लेने का. हियर KH तो आपका कट हो जाएगा. तो P इज इक्वल टू 7.62 बार भी दीजिए. क्लियर हुआ? दिस इज हेनरीज लॉ. P इज इक्वल टू KH इनटू X. तो यहाँ पे मास दिया है, बाकी सब डेटा कॉमन है, इसलिए हम लोग क्या किया है? मॉलिक्यूलर वेट को इग्नोर कर दिया है. इधर पे मॉलिक्यूलर वेट विल बी अगेन वी कैन से इट इग्नोर्ड वन. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन. अब आता है सी, what is meant by positive and negative deviation from Raoult's law, and how is the sign of delta X mix relative to positive and negative deviation from Raoult's law can be explained. So graph is given in your textbook, है ना? Graph is again we can say given in your textbook. Clear हुआ कि नहीं? तो first of all we will discuss here positive deviation. तो देखो, in positive deviation, see, in their solution having component A and B, the AB interaction in solutions are weaker than the AA and BB interaction into pure liquid. As a result, partial pressure of each component in the solution higher than the calculated from Raoult's law. Clear हुआ कि नहीं? As a result, what will happen? The calculated value will be again is higher.
So therefore PA is equal to PA0 into chi A and PB greater than PB0 into chi B. Clear? The total pressure always greater than. Clear? In other words, force of attraction between A B मतलब product is less as compared to individual reactant. Therefore, for positive deviation, delta is mixing greater than 0 and delta V mixing is again we can say greater than 0. Here for example, number 1 water and ethanol will be there. Number 2 chloroform and water will be there. Number 3 ethanol and carbon tetrachloride is there. Number 4 is methanol and chloroform. Number 5 is benzene and methanol. Number 6 ethanoic acid and toluene. Similarly acetone and ethanol and methanol and water will be there. So this is we can say an example related with respect to positive deviation. So this one is again this example related with respect to positive deviation. चलो अब यदि मैं ग्राफ बनाऊं सी तो यहाँ ग्राफ में क्या आ जाएगा हियर वी कैन से दैट वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन हियर वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन तो दिस वन इज सॉल्वेंट है ना and this one is again we can say that solute Pb is again the solute so this is P total so this will be again we can say that P total so P total is equal to Pa plus Pb. Now what will happen in case of positive deviation? In positive deviation graph will be like this one above ये क्या है तो positive deviation clear हुआ and negative deviation में क्या हो जाएगा तो graph will be again we can say that this one है ना and see this is solvent and this one is solute is given clear so you have to remember example of positive as well as negative deviation. So now in case of negative deviation Pa is less than Pa0 into chi A and Pb is less than Pb0 into chi B and here P total is equal to Pa plus Pb clear हुआ. Now in such type of deviation force of attraction of product will be more as compared to individual reactant. Here force of attraction will be more and in case of positive deviation force of attraction will be less. Now for negative deviation delta is mixing less than 0 and delta V mixing is again is less than 0. Now for example chloroform and acetone this is negative deviation and chloroform and acetone then water and HCl. Similarly, water and ammonia, water and nitric acid, ethanoic acid and pyridine, and chloroform and benzene. So these are example of we can say that positive as well as negative deviation. Here theoretical portion. See the concept of positive and negative deviation will be completely explained in case of theory. Correct?